So today's topic is the Fermi Dirac statistics uh, and what are its application. And you know, we know the properties of physical uh, systems are the parameters which we measure. For example, how temperature varies. For example, how the volume changes with temperature. For example, how the pressure changes with temperature. These are the parameters that we can directly measure. We can directly measure. So that is called thermodynamics, like our properties of thermal physics, and we measure them with our tools in the lab. So theoretically, we have a tool that is related with so many particles, and that is called statistics. Or if we apply to the motion of particles here, then we call it statistical mechanics, right? So when we measure the properties of physical systems thermally with our tools, the system must be in equilibrium. We can measure, we say, okay, the temperature is 29 degree. This means that that system is in equilibrium. If the system is not in equilibrium, we cannot say, oh, this is the temperature of the system, or this is the pressure of the system, because the system is not in equilibrium. If we are heating a system constantly, suppose we start boiling water in a kettle, right? अगर हम चाय पकाना शुरू कर दें, so if we start heating up water inside, so the temperature will constantly change. So we cannot say that, oh, this is the temperature of the system, because that water which we are constantly boiling or we are constantly heating up, that is not in equilibrium. So whenever we say there is the pressure of the system, okay, 100 millibar is the pressure of the system. So it automatically means that the system is in equilibrium. If it is not in equilibrium, if the system is not in equilibrium, you cannot say that, oh, this is the temperature, and this is the pressure, or this is the volume, or whatever. So the first condition is the system must be in equilibrium. I am giving you this, all this, we have done these things, but this is a little refreshing your mind. We have already done this, but since we have a lot of time has passed, so just to refresh. So bodies in equilibrium mean they will have a certain temperature, they will have a certain pressure, they will have, so the condition is things must be in equilibrium, otherwise we cannot measure their properties. Or if we measure them, they will be not accurate. So if systems are in equilibrium, we measure some properties. Now this is what we do thermally. Now, also there is a theory to thermal systems, if you remember, Dalton atomic theory, that the gases usually are made of a large number of tiny atoms or molecules, a large number. So there is, if the theory is true,
Then there is another branch of science which we can apply and test this nature, if the atomic or molecular theory is true or not. And that other branch of science, it is called statistics. So we apply the laws of statistics which are related with a large number of bodies. You take a sample of a very large number of bodies, and the science that deals with the properties of large number of bodies, large number of systems, that is called statistics. So we apply the laws of statistics to physical or thermal system and see, do we get the same thing what we get in our lab? If we get the same thing, it means, oh, so that kinetic theory or the molecular theory is true, because we applied the statistics laws to it, and the results agree. When the results agree, means they are true. Okay, so this picture, the picture that we have in mind of the physical system, it is kind of have some fraction of truth in it. So we will use that. So the topic is we have done the Bose-Einstein statistics, the distribution function, and we have done the Maxwell-Boltzmann distribution function and statistics, and those, they apply to certain type of particles. So there are some physical conditions that we will apply the statistical laws to it. So this kind of statistics that we are doing now today, this is called Fermi Dirac statistics. Fermi Dirac. Fermi and Dirac. Dirac related to quantum mechanics, Fermi related also to quantum mechanics. So this statistics is applicable to quantum particles, particles which obey quantum mechanical laws. A certain type, look, we put some physical conditions on the particles. We have divided particles into different types, like you divide plants into different families. We divided particles into different families. Some particles, general classical particles, do not obey any quantum mechanical principles like the Pauli exclusion principles, like their indistinguishability or distinguishability. So the Fermi Dirac particles are the particles which only one particle can sit in a certain state. Only one particle can occupy a state. It would be like a single person can sit on a chair. No more, no two people can sit on a single chair. So not two particles can occupy a single state. If you remember the Bose-Einstein statistics, I just told you, those particles are particles which do not mind if they sit, if 100 people are sitting on a single chair, no problem. So those were Bose-Einstein particles, different type of particles. This type of particle, Fermi Dirac particles. Those particles have a property that they obey Pauli exclusion principle, which means only one particle can occupy a state, no more than, so physical conditions, right? Physical conditions. They are quantum particles. Quantum particles, which mean that
right? Which means that no more than one particle can occupy state. No more than one particle can occupy a state, right? Which will meet. These are conditions, physical conditions. This is, we are classifying a certain family of particles. So, which means that if n is particle, if n is the number of particles in a state, or let me say Ni is the number of particles, right, in an energy level, ith level of energies. Suppose we have energies in different levels. So if Ni is the number of particles in the ith level, and if there are Gi states, there are Gi states in that energy level. इस कतार में कितने कुर्सियां हैं? इस कतार में कितनी कुर्सियां हैं? 10 कुर्सियां हैं इस कतार में. It means there are 10 states of that energy level. So there are Gi states in the ith level. Right? So this condition, the Pauli exclusion principle, right? The Pauli exclusion principle would apply that Ni shall always be less than or equal to Gi. Number of particles किसी भी कतार में या तो कुर्सियों से कम होंगे या कुर्सियों के बराबर होंगे. कुर्सियों से ज्यादा लोग एक कतार में नहीं आ सकते क्योंकि एक कुर्सी पर एक ही आदमी बैठ सकता है. So this is called, the Pauli exclusion principle. The Pauli exclusion principle, right? Okay. दूसरी बात जो हमारे पास सिस्टम है, ये हमारी कंडीशंस है. स्टैटिस्टिक्स से पहले हमारी फिजिकल कंडीशंस है. हम वो फिजिकल कंडीशंस से पार्टिकल्स को अपने सिस्टम को स्पेसिफाई करते हैं. We first specify our system. So we say let the total number of particles is n. Total number of particles in the system is n, a very large number of particles. And we say E is the total energy of the all the particles, right? Okay, so now if we divide this E, the total energy, into levels, हमारे पास energy levels हैं. हमारे पास एक छत है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल. इसी तरह हमारे पास energy levels हैं, right? So suppose there are energy levels and one particle is in energy level with energy E1 and two particles are energy in the second, suppose the second energy level with energy E2 and so on. An I particle is in some ith energy level, E I, in some ith energy level, right? So now we have a condition. We have a condition, right? The total energy is constant. The condition is the total energy is constant. That is one condition. That, look, our system has certain conditions. The Pauli exclusion principle,
And the second one is it has a constant number of particles and a constant number, a constant amount of energy, which would mean, इसका मतलब क्या है इस बात का कि इसकी डिफरेंशियल जीरो है। इसको अगर मैं दूसरी जुबान में लिखूं, इन चीजों को दूसरी जुबान में लिखूं, तो क्या मेरे पास आता है? मेरे पास आता है सिग्मा, राइट? GNI is equal to 0। अगर मैं इसकी डिफरेंशियल ले लूं, तमाम आई हर एनर्जी लेवल में जो भी पार्टिकल्स हैं, तमाम एनर्जी लेवल में जो भी पार्टिकल है उनको मैं डिफरेंशिएट करूं तो जीरो आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तमाम एनर्जी लेवल में जो पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट है। तो इस समेशन को derivative of the summation of Ni is equal to 0. There is one condition, and let me call it equation number 1. And since I am not going in accordance with the order of my notes, मैं अपने notes के order में नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए आप इसको note करें ताकि मुझे equation numbers बताया करें। So this is equation number 1. दूसरी कंडीशन इससे क्या बनती है? The total energy is equal to constant. So total energy equal to constant means अगर एक एनर्जी लेवल में उसकी Ni पार्टिकल्स हैं और उसकी एनर्जी E1 है, तो टोटल एनर्जी मेरे पास आएगी N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 प्लस सो ऑन Ni EI। ये मेरे पास तमाम की मसलन लेवल नंबर 1 में 2 पार्टिकल्स हैं, तो एक की एनर्जी E1, दूसरे की भी एनर्जी E1, तो उसको जमा करें तो 2E1 आ जाएगा। तो इसी तरह मेरे पास फर्स्ट लेवल में N1 E1, दूसरी लेवल की एनर्जी तमाम पार्टिकल्स की N2 E2 सो ऑन। सब इसको सम करते हैं और तमाम को सम करें तो मेरे पास आ जाएगा EI NI। क्योंकि EI कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो EI से डेरिवेटिव की सैंपल जो है वो इधर आ जाएगा। GNI is equal to, राइट? ये क्या है असल में? डेरिवेटिव ऑफ all the sum of the particles. It would be like this. Derivative of Ni is equal to 0. तो मैं इसको जो है वो इस तरह में लिखता हूं ताकि मेरे पास टाइम बच जाए। इस तरह डेरिवेटिव ऑफ EI Ni is equal to 0. तो EI कांस्टेंट है तो मैं इसको लिखता हूं ओके सिग्मा EI DNI is equal to EI मेरे पास ऐसे ही कांस्टेंट है, राइट? Okay, so these two are these the conditions with me. Our particles, our system is like this. अब इस सिस्टम को हमने स्टैटिस्टिकल लॉज अप्लाई कर दी। ये मेरे पास क्या है? ये फर्मी डिराक सिस्टम, फर्मी डिराक सिस्टम है। ये मेरे पास फर्मी डिराक सिस्टम, मेरे पास फर्मी डिराक सिस्टम इस किस्म का होगा। फर्मी डिराक सिस्टम मेरे पास इस किस्म का है। ये मेरे पास फर्मी डिराक सिस्टम है। अब मैं इसको स्टैटिस्टिकल लॉज अप्लाई करता हूं। स्टैटिस्टिकल लॉज में इसको अप्लाई करता हूं, सही है? तो कंडीशन पहले, पार्टिकल्स आर, एक बात मैं भूल गया, द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। मैं इसको थर्ड नंबर पे लिखता हूं, पार्टिकल्स आर indistinguishable from each other. Particles are indistinguishable. Right? So now I want to apply the laws of statistical mechanics to these particles. I want to apply the laws of statistics to these particles. Right? Okay. Suppose
मेरे पास क्या है, सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम वन, मेरे पास कुछ स्लॉट्स हैं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्लॉट्स हैं। ये मेरे पास क्या है, स्लॉट्स। ये मेरे पास बर्तन है, बर्तन, मैं इसमें एक एक चीज डाल दूं। मेरे पास फर्ज करें, ये मेरे पास स्टेट्स, इसको मैं स्टेट्स कहता हूँ, बर्तन को मैं स्टेट्स कहता हूँ। सपोज मेरे पास जी आई स्टेट्स है, एक एनर्जी लेवल है, ये मेरे पास एनर्जी लेवल ई आई है, सपोज इसमें मेरे पास ये स्टेट्स है, राइट। अब ये है कि मेरे पास अगर पार्टिकल्स हैं दो, मसलन दो पार्टिकल्स हैं मेरे पास, राइट, तो मेरे पास या तो मैं इधर पार्टिकल को रख सकता हूँ, चॉइसेस कितने हैं, या तो मैं इधर रख सकता हूँ, या अपने पार्टिकल्स को इधर रख सकता हूँ, या अपने पार्टिकल को इधर रख सकता हूँ, या अपने पार्टिकल को इधर रख सकता हूँ। सो मेरे पास देखिए चार वेज है, मेरे पास फोर वेज, राइट। अब मैं आगे चलूं, एक पार्टिकल को मैंने रख दिया, सो मेरे पास कितने वेज हैं, सपोज मेरे पास पार्टिकल कितने हैं, एन आई मेरे पास सपोज दो है। मैं एक एग्जांपल फिर भी दे दूंगा उसके बाद भी, आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल। सो फर्स्ट पार्टिकल, राइट, मेरे पास चॉइसेस हैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए, मेरे पास है फोर चॉइसेस, राइट। मैं दर्ज कर सकता हूं अपनी वो इसमें, ये फर्स्ट के मेरे पास नंबर वन है, राइट, ये मेरे पास क्या है, नंबर वन है, और ये नंबर टू स्टेट है, ये नंबर थ्री, और ये नंबर फोर नंबर स्टेट है। पार्टिकल्स को मैं रखता हूं, ये मेरे पास पार्टिकल्स मेरे पास लेटर है, इसको मैंने ए लिखा, तो ए को मैं इधर रख सकता हूं, आई कैन पुट ए हियर, आई कैन पुट ए इन थ्री, आई कैन पुट ए इन फोर। तो मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, फोर चॉइसेस हैं। अगर मैंने ए को पुट कर दिया तो मेरे पास बी पार्टिकल नंबर बी है, सो आई कैन पुट पार्टिकल नंबर बी इन हियर and here or here. So मेरे पास three ways है, I have three ways to put the second particle anywhere in the state 2, 3 or 4. So total number of ways मेरे पास है 4 multiplied by 3, 12 ways है मेरे पास, right? इसमें मैं आपने पार्टिकल्स को रख, मसलन हर एक के लिए देखिए, इसके लिए मेरे पास बेस है 4, इसके लिए। अब अगर मैं ए को 1 की बजाय 2 में रखूं, राइट, अगेन मेरे पास क्या है 1 2 3 4, 1 2 3, दूसरे पार्टिकल के लिए 1 2 3 बेस। सो फॉर ईच वी हैव, each of the place we have 3 for the second. That is why we multiplied it, right? So generally, right, we have done this, and I will just give you an example, another example too. चलिए एक और एग्जाम्पल सिंपल इसमें, ओके चलो मैं आगे चलता हूँ, फिर मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल दे देता हूँ। सो
if we have to occupy, we have to place some number of Ni number of particles in a Gi state, then the total number of ways will be equal to, right? Like taking this is N, this is N, and this is 4 minus 4 minus 3 minus 1. Okay. Now, what I have, if I have G, I states, and I particles, I have to put them. So first मेरे पास क्या है? Number of ways को मेरे पास मैं इसको जो है वो multiply करता हूँ. जिस तरह मेरे पास Gi ways थे तो मैंने Gi से multiply किया. Gi मेरे पास पर उसके Gi वो है. then ये कम देखिए ये दूसरा क्या है? This is Gi and this is Gi minus 1. Gi, which is 4, and Gi, this 3 can be written as 4 minus 1. So this is like the second will be Gi minus 1. If I have more particles, if I have 3 particles, then the rest I will have only 2 slots remaining. If I have 3 particles, right? ये दो जो है वो ऑक्युपाई है, तो तीसरे के लिए मेरे पास सिर्फ ये दो choices हैं, and दो is equal to 4 minus 2. So there will be the next Gi minus 2. इस तरह जो है वो I will be the number of ways, right? आखिर में जो आता है, अगर मेरे पास n है, so that will be Gi minus Ni minus 1. देखिए Gi minus Ni minus 1, right? So I can write this, the number of ways. This is the number of ways. What is this? The number of ways. Number of ways. So the number of ways, this thing can be written as this whole thing. Gi factorial divided by Gi factorial, right? Divided by this, इसको किस तरह लिख सकते हैं? Gi factorial divided by Gi minus Ni factorial. Gi minus Ni factorial. इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख सकता हूँ किसको? It is like this. मेरे पास क्या है? मतलब मेरे पास like 5 and 3 multiplied by 3, right? इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरह? तो मैं लिख सकता हूँ 5 factorial divided by, right, 2 factorial. So इस तरह इस प्रोडक्ट को मैं लिख सकता हूँ Gi factorial divided by Gi minus Ni factorial. So Gi factorial divided by Gi minus Ni factorial. ये factorial का सिंपल इधर रखें. Gi factorial divided by Gi minus Ni factorial is equal to this thing. तो ये मेरे पास ये सिचुएशन आ गई. This thing, right? The number of ways is equal to this thing. लेकिन याद रखिए मेरे पास क्या था? इसको मैंने D को सपोज इधर लिखा हुआ था. मेरे पास पार्टिकल्स A और B मैंने लिखे हुए थे. A और B पार्टिकल्स को मैंने डिस्टिंग्विशेबल बना लिया था इसमें.
जब मैंने ये कर रहा था तो पार्टिकल्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूशेबल बना दिया। पार्टिकल्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स की ये फैमिली है, दिस इज इनडिस्ट्रीब्यूशेबल। तो ये मेरे पास सही रिजल्ट नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट विद मी, राइट? सो आई विल हैव टू तो इसके साथ मैंने क्या करना है? I am bringing the situation when I have indistinguishable particles. If they are no longer like A and B particles, को हम now they are indistinguishable, एक को दूसरे के से जुदा नहीं कर सकते. So A and B are no longer differentiable. They are no longer, you cannot differentiate. So इसका मतलब है कि कुछ ways हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं. हमारे पास we have some extra ways जो particles की distinguish, मसलन मैं पहली हूँ और some x y z, some x man is second to me. This is a different way of putting men together. If we are not distinguishable, then it does not mean, it does not matter. इसका कोई फायदा नहीं है कि मैं कहूँ मैं आगे हूँ और वो दूसरा नंबर पे है, या मैं दूसरे नंबर पे हूँ और वो फर्स्ट नंबर पे है. इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से इंडिस्टिंग्विशेबल है. तो इसका मतलब है ये वेज जो मैंने इसको शुमार किया कि ये भी एक तरीका है, ये तरीका एक्स्ट्रा है अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल. तो इसको अपने इसमें फार्मूले मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, तमाम नंबर ऑफ वेज को हम n फैक्टोरियल पे डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो हमारे पास जो डिस्टिंग्विशेबिलिटी की वजह से जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वेज आ रही थी, जो ज्यादा जरूरत से ज्यादा तरीके आ रहे थे, वो तरीके खत्म हो जाएंगे, राइट? सो फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल or indistinguishable particles, right? The number of ways, इसको मैं ओमेगा लिखता हूँ now. The number of ways in which particles can be accommodated in an ith level having GI states. इसको मैं क्या करता हूँ, इस चीज को मैं अब ni फैक्टोरियल में डिवाइड करता हूँ, ताकि वो हमारे पास जरूरत से जो ज्यादा होती है वो चली जाए. So there will be GI factorial divided by GI minus NI factorial. Or next, what I should do? I should divide this by n factorial 2. I should divide this by n factorial. We have done this in Bose-Einstein statistics, right? But this is just a demonstration. So this is equation number 3 again, right? यहाँ तक हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स. इससे आगे हम फिजिक्स अप्लाई करेंगे कि एक एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है. ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स का हो गया. फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर ये आ गया, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन अब हम आगे करेंगे. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. We want to take an example, right? Suppose we have 3 states
and two particles. We have three states and two particles. So from this formula, the number of ways will be equal to किसी भी लेवल में nth लेवल किसी भी लेवल में हमारे पास क्या है three states हैं और two particles हैं. So this will be states factorial 3 factorial divided by 3 minus 2 equal to 1 factorial, right? 1 factorial and then ni factorial, which means 2 factorial. And this comes out to be 3. So the total number of ways with the particles are indistinguishable. एक दूसरे से आप इसको जुदा नहीं कर सकते. हमारे पास ways क्या हैं टोटल, जिस तरीकों को हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं. ये एक अदर तरीका है कतार बनाने का और ये एक अदर, ये इससे अलग एक कतार बनाने का एक तरीका है और ये दूसरा इससे अलग है. अगर दो कतार बनाने के तरीके जो है एक दूसरे के तरह हैं तो they are not counted in statistics. So this is what we get from it. Now we suppose we have 3 slots, right? हमारे पास क्या है 3 slots हैं. हमारे पास भी है 3 slots. Since particles are indistinguishable, therefore let us represent them by dots, not by letters, not by A, B, C. Let us represent them by dots because dots you cannot differentiate, right? So, एक particle को मैं इधर रख लेता हूँ. I put one particle here, right? And one particle here. एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका ये है कि एक पार्टिकल को मैं इधर रख लेता हूं, इसको मैं खाली छोड़ देता हूं और दूसरे पार्टिकल्स को मैं इस कुर्सी पे बिठा देता हूं. This is a different way, right? तीसरा तरीका, the third way is like I can leave this chair empty and place the person here in this chair or here in the second one here in this chair. No more ways. बाकी जितने भी ways होंगे वो या तो इसकी तरह होंगे या इसकी तरह होंगे या इसकी तरह होंगे. इस बाकी आप जितने भी कतारें बनाए नहीं बना सकते वो इसमें से किसी एक की तरह होंगे. So these are the 3 ways when the particles are indistinguishable. अगर particle distinguishable है, A, B है, तो एक और तरीका भी आ जाता है. A को इधर रखें, B को इधर रखें. ये एक different कतार का तरीका है बनाने का. या B को इधर रखें और A को इधर रखें. So this is a new row, a new method of putting things together. अब हमारे पास क्या है? वो नहीं है. Particles indistinguishable हैं. Therefore, A and B cannot be separated. Therefore, there is only one way here, one way this. So there are 3 ways. So हमारा फार्मूला जो है, फार्मूला हमारा ठीक है. ये फार्मूला नंबर 3. That is true. Right? Now this is the principles, right? To derive the distribution function. अब ये है हम find a formula for how the particles are distributed, right, in all the energy levels. इसमें ये है, इतने में ये है, इतने में ये होने चाहिए.
and that is under some physical condition. We say, as I told you in the start, that we measure properties of the physical system when they are in equilibrium. और हमने पिछले उस क्लासरूम में पढ़ा था कि equilibrium will mean the maximum thermodynamic probability. This, we call this, if you remember, this was called the thermodynamic probability as well, right? So, आपके पास the thermodynamic probability should be a maximum if the system is in equilibrium. We have done this in the previous classes. It should be in a maximum. So we should find out the number of waves in each energy level and then find the total number of waves, right? And we say if omega, now we are applying the physical, we are applying physics. Applying physics now. Physics में हम equilibrium पे करवाते हैं, and we saw that the thermodynamic probability, if omega is the thermodynamic probability of the whole system. This is the number of waves in one energy level. Omega 1 जो है, which gives you the distribution of particles in level number 1. Omega 2 gives you the number of ways in which the particles can be distributed in level number 2, and so on. So आपके पास बहुत ज़्यादा levels हैं. तो इन सब की thermodynamic probability क्या है? So इसको हम multiply करते हैं ना, जिस तरह हमने पहले multiply किया. एक के लिए, फिर अगर उसकी दूसरी वो वे है, उसके लिए हर एक के लिए दूसरी की मुख्तलिफ किस्म की वो है वेज हैं, हर एक के लिए दूसरी की मुख्तलिफ किस्म की वेज हैं. तो इसको उसके लिए हम क्या करते हैं, सम नहीं करते. वी डू नॉट सम देम, वी मल्टीप्लाई देम, बिकॉज हर एक के लिए दूसरी के कितने कितने, वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेज फॉर a large number of ways for a single one way in a certain energy level. So we will multiply the and all the number of ways in a single level. So phi, right, phi I multiplied by omega I, right? ये मेरे पास एक लेवल है, ये एक लेवल में 3 वेज हैं. एक लेवल में कितने वेज हैं? अगर मेरे पास 2 लेवल्स हैं मसलन, उसमें भी कोई वेज होंगे. फिर मेरे पास तीसरी लेवल है, उसमें भी कोई नंबर ऑफ वेज होंगे. तो इसके लिए मेरे पास ये 2 भी हैं और साथ ये तीसरे चौथे वगैरह वगैरह उसके भी. तो we give them like, if we have 2 levels, then omega will be equal to omega 1 multiplied by omega 2. The total number of ways will be equal to omega 1 multiplied by omega 2 if we have 2 levels. If you have 2 levels, इसमें एक में इस तरह है और दूसरे में इस तरह, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने होते हैं, सम नहीं, because the sum will give you a smaller number of ways. Multiply करते हैं, right? This we have done this. So now, if this is equation number 4, right? So we put 3 and 4. 3 in 4. So omega will be equal to phi I, right? G I factorial divided by G I minus N I factorial and N I factorial. Sorry, N I factorial.
right? And that is equation number 5. ये मेरे पास ये big omega. This is the thermodynamic probability of the system. Thermodynamic probability of the system. The thermodynamic probability of the whole system. जिसमें लेवल 1 भी है, लेवल 2 भी है, वगैरह वगैरह. Now I will be applying the physics, right? So the physics is a number of equilibrium means equilibrium. We should come to the equilibrium. Equilibrium means maximum number of ways. So maximum number of ways we determine it. We use calculus here. We take the differential and make it equal to 0, so it gives you a maximum. It also gives you a minimum. So it gives you a maximum. So what we do to come to equilibrium, to come to equilibrium, we are coming to equilibrium. R will get differential of R, derivative of omega to 0. Bring the derivative of omega to 0 because to see the maximum. Maximum means equilibrium. Since this is a very large quantity, so bड़ी quantities, things that vary a lot, हमारे पास huge number of quantities हैं, तो उनको काबू में लाने के लिए हम log apply करते हैं, इसको log scale में लाने के लिए इसको log apply करते हैं. Therefore, this is a very large system. हमारे पास 10 to the power 23 particles हैं, जिसका कोई शुमार ही नहीं है. So उनको अपने काबू में लाने के लिए we will apply log to it. Right? So I will say derivative of log of omega is equal to 0. ताकि हमारे पास ये maximum determine हो जाए कि maximum omega कहाँ पर है, maximum omega कहाँ आता है. Right? So we take log of omega and then we take the derivative of it and put it equal to 0 to get the maximum. Right? Okay. Well, this is the question number. Oh, sorry. This is not 4. This is the question number 5. Question number 5. So, log of equation 5. So, now this is the question number 6. Now, log of omega, we want to find log of omega, is equal to log of pi I Gi divided by Gi minus Ni factorial and to Ni factorial. Right? After that, we know that log converts product into sum. Log converts product into sum. So this log will convert this product. Log will convert pi into sigma. And then applying the laws. Sigma I, and it will be like what? Log of Gi factorial minus log of Gi minus Ni factorial and minus log of this minus log of Ni factorial. Right? Now we apply Sterling approximation to it. This is a very
Sterling approximation, right? Sterling approximation is log of x factorial is equal to x log of x minus x. That is Sterling approximation, right? So we apply Sterling approximation to this situation. I will say question number which one? So suppose that is equation number 7. Equation number 7 को हम Sterling approximation apply करते हैं. इसको हम Sterling approximation apply करें. This will be what? We want to apply Sterling approximation to this equation. Sterling approximation to, so equation 7 becomes, when we apply Sterling approximation to equation number 7, log of gi factorial will be equal to gi log of gi minus gi. Similarly, this will be gi minus ni log of gi minus ni minus ये minus one वो नहीं करना उसको then से पहले नहीं करना and this will be minus gi minus ni. Similarly here it will be ni log of ni minus ni. So we apply this Sterling approximation, right? And we get log of omega is equal to sigma 1 gi log of gi. For it to have a term, a lot of many terms will cancel with each other. So minus gi minus ni and to log of सर ये लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा. सर ये लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा बोर्ड का. this side or this side? ये राइट सर, राइट साइड सर. सॉरी. This one? यस सर, ये नहीं दिख रहा. Okay. How is it now? अब ठीक हुआ सर. ठीक हुआ? यस सर. Okay. So this is log of gi minus ni, and then it will be minus ni log of ni. Right? Now we put this. This is the full equation number 8. So we put equation number 8 into equation number 6, which is the derivative. So 8 into, yes? सर यहाँ पर ये जो जी आई माइनस एन आई के बाद फैक्टोरियल है सर, स्टेलिक अप्रोक्सीमेशन में फैक्टोरियल नहीं आएगा. फैक्टोरियल जो है ये देखिए फैक्टोरियल का ये है, फैक्टोरियल एक बड़ी क्वांटिटी है and we change it to simple terms from the Sterling approximation. So log of xi factorial will be to log x minus x. तो अब इसकी बात कर रहे हैं, इसमें फैक्टोरियल नहीं है. और ये इसमें जो है देखिए इसमें मैंने एक स्टेप को ओमिट किया हुआ है. एक स्टेप इसके दरमियान है. आपने इसको इस approximation को you have to apply this approximation to this, then this approximation to the second term, then this approximation to the third term. उसमें से आपके पास कुछ terms बाहम जो है वो खत्म हो जाएंगे, minus plus हो जाएंगे. So what you will get is this thing, and this not a single term here.
इनमें से कोई भी किसी के पास भी फैक्टोरियल नहीं है। फैक्टोरियल से निजात पाने के लिए तो हमने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया। हमने फैक्टोरियल से निजात पाने के लिए स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन भी अप्लाई। इसमें से कोई वो नहीं है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है। You apply them and it is like very simple. So how you get it? Now, what we get? D log of omega, right? आप मेरे ख्याल में चलो मैं कर लेता हूँ अभी, लेकिन ये जो है आपने खुद करना चाहेंगे। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ द, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कोई भी बता दे। डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? अब्बास तुम बताओ। सर 0 आएगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। क्यों 0 आएगा? सर ये स्टेट्स है तो ये तो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, एक्सेलेंट। तो अगर 0 को मैं यहां न लिखूं तो आपको एतराज तो नहीं होगा? नो सर। अच्छा, एतराज नहीं होगा। फिर इसको देखिए, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, जी आई माइनस एन आई मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई। इसको हम 0 नहीं कर सकते, क्यों? इसको हम 0 नहीं कर सकते, क्यों? सर ये साथ में एन आई भी है उसमें। एन आई भी है, एन आई वेरिएबल है। जी आई स्टेट, किसी स्टेट में कभी एन आई 2 हो सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। स्टेट तो कुर्सियां तो हैं, लेकिन कुर्सियों में से एक बंदा उठ के जो है वो पिछले वाले कतार में भी जा सकता है, पाबंदी नहीं है। तो इसलिए भी कहना take the derivative of this equal to 0 and we apply the product rule here. We will apply the product rule here. So it will be like minus ji minus ni and 1 over ji minus ni, right? And then minus dni, then मैंने product rule apply किया, and minus log of gi minus ni, right? First function, derivative of the second function, साथ माइनस लगा हुआ है इसलिए मैंने इसको माइनस भी कर दिया, राइट? एंड देन dni minus dni, इसको देखिए, where is this? इधर है this one, and oh, this. So first function, derivative of the second function, minus second function, derivative of the first. Derivative of the first is minus dni 2. And now third payment apply. So that will be minus ni over 1 over ni dni, और साथ minus log of ni and dni, right? बहुत सारी चीजें इसमें कैंसिल हो जाती हैं। This goes with this, right? If we divide, you just this goes with this. What do you get?
अब इसके साथ शॉर्टकट हमारे पास क्या लग गया, डी log of omega is equal to sigma, right, d and I plus d and I log of di minus ni सर अब ये दूसरा साइड ये दिखाई नहीं दे रहा? यस सर। हाउ इज इट नाउ? सर अभी ठीक है सर, ठीक है सर, अब दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो माइनस जे एन आई राइट किधर है, एन माइनस log of एन आई into d एन आई, ये वाला लास्ट वाला माइनस log of एन आई d एन आई, राइट? आप देखें, दिस इज माइनस d एन आई plus d and I 0, so it will be equal to d log of omega is equal to sigma, right, and to log of, right, log of gi minus ni divided by ni logarithm. I use the laws of logarithm. माइनस को नीचे, प्लस को ऊपर, प्लस को प्रोडक्ट में, माइनस को डिवीजन में, राइट? So I applied the laws of logarithm, and I also took d and I common. I took it. Look, d and I is here. No, these are going. D and I is here. D and I is here. I took d and I common. Now we know it from equation number, which one? Equation number 6, I believe. This d log of this was equal to 0 for equilibrium. For equilibrium. For equilibrium, this thing is equal to d log of omega was equal to 0. So summation log of gi minus ni divided by ni and to d and I is equal to 0. Is equal to 0. I think this is equation number, which one? 9, suppose. This is equal to 0. Now, taking equation 9 in combination with 1 and 2. Equation 9 को हम कंडीशन, हमारे पास कंडीशंस थी, दी कंडीशन, हमारे पास जो कंडीशन थी, conditions, हमारे पास conditions थी, right? हमारे पास condition थी sigma d and I equal to and sigma e I d and I was equal to 0. ये हमारे पास एक condition थी, हमारी physical system की condition थी. Energy constant है, total number of particles constant है. These are the conditions. इन कंडीशंस के थ्रू में ही अपनी स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं. अब ये है
अपना काम आसान बनाने के ये मेरे पास क्या है look this is like kind of an algebraic expression no it is like this something look some constant dn1 plus some constant C2 D and 2 plus some constant C3 D and 3 plus so on. Some constant C I D and I is equal to 0. इसको हम ये इक्वेशन 9 को इस तरह लिख सकते हैं 9 को ये क्या चीज है ये मैथमेटिक्स की कौन सी किस्म है हाँ anyone इसको मैथमेटिक्स में 8वीं के मैथमेटिक्स में 7वीं के मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन है हाँ लीनियर इक्वेशन है अच्छा बेटा मैं इसको कहता हूँ पॉलिनोमियल राइट यस सर लीनियर भी है काइंड ऑफ लेकिन इसके पॉलिनोमियल्स कहते हैं राइट यस an algebraic expression containing so many terms term number 1 term number 2 term 3 term number 4 5 6 that is called a polynomial and in a polynomial right we know that these are the variables dn1 dn2 dn3 these are the variable like x1 it's like this a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 plus so on n xn and if this is equal to we say this is equal to 0 this is equal to 0 this is equal to 0 this is a polynomial right so अगर these are coefficients अगर पॉलिनोमियल में तमाम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो ये हमारे पास रूल्स है अलजेब्रा का we have that rule that all the coefficients are then separately equal to 0 अगर ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं देखिए all हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते वो एक दूसरे को नहीं कहते कि चलिए जी इसमें ये इधर बैठा हुआ है तो मैं उधर बैठूंगा नहीं एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते इंडिपेंडेंट है सिस्टम को उधर लाने के लिए इंडिपेंडेंट एक कुर्सी को ऑक्युपाई करने के लिए सो लुक टू ब्रिंग दीज वेरिएबल्स टू द इंडिपेंडेंट सिचुएशन to know that these are independent, to bring them to the condition that the occupation is independent, right? So we apply the method of Lagrange multipliers. We have done that, right? We apply the method of Lagrange's multipliers. Lagrange's multipliers. उसमें क्या है 6 Lagrange's multiplier method जो भी हमारे पास condition है we apply constant we multiply some constant with the conditions and then add to this polynomial and this becomes then all the variables all the terms in the variables all the x1 x2 x3 they become independent and मैंने आपको कहा था they are in the if you remember मैंने कहा था ये appendix plan में लिखी हुई है आपको याद है and there are the Reef book and the Salinger are available in short form. Uzairs आपके पास भी हैं.
उनसे भी आप ले सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के पास भी होंगे। तो दिस इज द मेथड ऑफ Lagrange मल्टीप्लायर। सो हम क्या करते हैं नाउ भी, हम कहेंगे जो हमारे पास कंडीशंस है, मल्टीप्लाई 1 right by alpha and 2 by beta and subtract right from वो कौन सा इक्वेशन था जो हमने अभी लिखा, 9 रिमेंबर, ये मैं अपने नोट्स से, आई एम गोइंग नॉट अकॉर्डिंग टू माय नोट्स, तो सारे इक्वेशन जो है मेरे नोट्स की तरह नहीं है, आई कैन नॉट कॉपी द नंबर ऑफ इक्वेशंस फ्रॉम माय नोट्स, सो जस्ट चेक ऑन इट। तो इक्वेशन 9 से हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं इस चीज को, कंडीशन नंबर 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी मल्टीप्लाई कंडीशन नंबर 2 with beta and subtract it from equation number 9. So what we get is sigma log of di minus ni or ni minus alpha minus beta ei, और d and i को मैंने कॉमन ले लिया, d and i I took it common, right, is equal to 0. Now we applied the Lagrange method. Now all the d and i's are independent. The d and i's are independent of each other. D and i's मेरे पास अब सारे इंडिपेंडेंट, ये सारे x जो है x1 इंडिपेंडेंट ऑफ x2 है, x2 इंडिपेंडेंट ऑफ x3, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब अगर कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता और इनका सम फिर भी 0 है, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता एंड द सम इज 0, इट मींस तमाम का जो कोएफिशिएंट है वो सेपरेटली 0, ये भी 0 है, ये 2 भी 0 है, A3 is also 0, A4 is also 0, जितने भी A's हैं वो तमाम 0 हैं separately. If the equations, if the variables depend on each other and you get sum equal to 0, then it does not mean that all the coefficients are equal to 0. But if all the variables are independent, और फिर भी आप इन सबको sum करें and you get 0, it means from algebra that all the coefficients must be separately equal to 0. इसका मतलब ये देखिए, ये हर एक की कोएफिशिएंट है, ये हर एक की कोएफिशिएंट है, d1 की कोएफिशिएंट है g1 minus n1 divided by n1 and to log minus alpha minus beta epsilon 1. So the i's are independent, right? Therefore, log of gi minus ni divided by ni minus alpha, right, into minus beta ei, right, is equal to 0. इसकी कोएफिशिएंट जो है सेपरेटली इक्वल टू 0.
Now we can write this as we bring alpha and beta to the other side. So Gi minus Ni divided by Ni. This can be written as e to the power alpha plus beta Ei are Gi or Ni minus 1 is equal to alpha plus beta Ei. Our Gi is equal to, right? Gi over Ni is equal to 1 plus e to the power alpha plus beta Ei. Right? Ni is equal to Ni by Gi is equal to 1 plus e to the power alpha plus beta Ei. Right? Or Ni is equal to Gi divided by 1 plus e to the power alpha plus beta Ei. Is it visible? So, a question then gives the number of particles of Fermi Dirac particles in level I with states Gi with the condition N and E is equal to constant. ये हमारे पास that is the Fermi Dirac distribution of particles. The distribution of particles in all the levels. And the particles which are Fermi Dirac particles. Particles which are indistinguishable and which obey the Pauli exclusion principle. Quantum mechanical particles. No more than one particle can occupy a single state. Right? So that is the distribution function.
This is the distribution function. Very important. We will do its applications then, right? And can someone tell me the formula for the Bose-Einstein distribution? Can someone tell me the formula for the Bose-Einstein distribution function? सर इसमें उसमें वो डिनोमिनेटर में 1 माइनस है। आपने याद कैसे किया इसको? आपने किस तरह याद किया इसको? सर मैं वैसे ही देख रहा था। तो आपको याद आ गया, इसका मतलब है आपका हाफिजा बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे तो याद नहीं आता। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में और बोस-आइंस्टाइन में मैंने अपने लिए कुछ चीज एक ट्रिक मुकर्रर की है। मैंने अपने लिए एक ट्रिक मुकर्रर की है। मैं कहता हूँ since Bose-Einstein में since there can be a large number of particles in a level because there is no condition on how many particles can be occupied in a single level. इसमें यानी कोई शर्त नहीं है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स एक ही लेवल में एक ही स्टेट में बैठ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने इसके लिए ये ट्रिक लगाया हुआ है कि इन उसके लिए ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ लेवल ज्यादा होना चाहिए। ये मैंने ऐसे ट्रिक में अपनी याददाश्त के लिए लगाया हुआ है, मुझे याद नहीं आता। तो इसलिए उसमें डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तो उसमें इसलिए 1 माइनस होना चाहिए। फर्मी डिराक में चूंकि इस पे कंडीशन है कि एक कुर्सी में एक बंदे से ज्यादा नहीं बैठ सकता, तो इसमें एक लेवल में पार्टिकल्स कम होंगे, तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। एंड बड़े डिनोमिनेटर का मतलब है 1 प्लस समथिंग होना चाहिए, 1 प्लस समथिंग होना चाहिए। एंड आई बिलीव वी हैव आल्सो डन, ये भी हमने कैलकुलेट किया है कि अल्फा क्या चीज है और बीटा क्या चीज है। हमने beta was equal to 1 over kt if you remember, and alpha हमने भी कैलकुलेट। कोई किसी को याद है अल्फा क्या था? आपको याद है? म्यू बाय केटी सर। नहीं, अल्फा आपको याद है? अल्फा 0 था। ये सर वो म्यू बाय केटी हमने एक जगह पर पुट किया था। हाँ, और म्यू क्या था? केमिकल म्यू क्या था यार? वो केमिकल पोटेंशियल था। केमिकल पोटेंशियल था। हमने मेरे ख्याल में बोस-आइंस्टाइन में किया हुआ था या उसमें मैक्सवेल में किया हुआ था। सो दिस इज द सेम थिंग। उस कंडीशन को फिर भी आप जो है वो अल्फा आपको पता है कि क्या है और बीटा आपको पता है कि क्या है। बीटा इज इक्वल टू 1 over kT, mu is alpha is equal to mu by kT, right, where v is the chemical potential, right? Sometimes this EI, आप जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे, this EI or semiconductor और solid state में जाएंगे, this EI is called the Fermi level, Fermi energy or Fermi level. This is called the Fermi level. आप जाएंगे अपने solid state physics में क्वांटम मैकेनिक्स। So this is the distribution function for the number of particles in different levels, and next time hopefully we will do the free electron gas, or we will consider the electrons in a metal as free particles like a gas, free molecules like molecules, and apply this statistics and see if we get true results, if this statistics is true or not. So we will do that. Is an example. Electrons in a metal
Electrons in a metal. We see the electrons in a metal are like, there is a sea of molecules, like a sea of water. And electrons are like this, right? So I will just finish here. If somebody has question, so I will wait. Uh, okay, so nobody has question, and there are very few students. I don't know why. There are like maybe 14 to 15 students at, or at the most. So I don't know why there are so few students. I may stop giving you lectures then, and I may just find some notes for you or whatever, and stop this lecture because there are not many people attending uh, these online lectures. So I don't like it. There are 15 people are not much. So again, if there is any question, so I can discuss or you can discuss with me. If no, then goodbye and see you next time, and hope that everybody is safe from Corona and keep safe and stay home and not to move a lot. Okay, bye bye.